Hello and welcome. Very good morning. Thanks for joining us here on Mirror Now. I'm Afrida Rahman Ali. In the top story at this hour, a Congress youth wing leader was caught on camera threatening a first-year college woman student in Shahjahanpur in Uttar Pradesh. The NSUI district president Irfan Hussain threatened a student in front of the college staff after she protested against an eve-teasing incident. Irfan Hussain, the district president, was seen backing those who allegedly harassed the teen and asked the student to behave if she wanted to stay in the college for the next 3 years. After the video went viral, the Congress student body has now suspended Hussain. Prashant Kumar joining us on the phone line. Prashant, now this is a kind of, campus threatening and intimidation that probably goes on at various levels. But here is somebody who calls himself a youth leader. Can you tell us what happened, please? Well, this girl student was trying to raise a voice against the eve-teasing, and that's when this leader, one who calls himself an NSUI leader, Irfan, came forward and tried to intimidate her. And if you look at the video carefully, he's in fact trying to threaten her by saying that if you want to continue your studies for the next 3 years, for the very fact that you're in first year, mend your ways. Otherwise, I'll make it tough for you to finish the course. So this is the kind of intimidation that is happening in the state of Uttar Pradesh. But shockingly, the person happens to be from NSUI, which is also the youth wing, the students' wing of the Congress party, or the frontal organization. But as soon as the video went viral and the story was picked up by various media channels, NSUI swung into action, and perhaps this guy has now been suspended. Yes. But the fact still remains that just a mere suspension is something that would not do in this particular case, because what he's trying to do is something that is completely unacceptable and bizarre. Yes, also because he is a student representative where he is supposed to protect the interests of women and safety of women in the campus. And if reports are to go by, this was a case of eve-teasing, owing to which the woman in question wanted to register a protest, and then she was, there were attempts to silence her by this NSUI leader. Well, that's right. Now, this is exactly why I'm saying that perhaps a mere suspension is something that won't do. There needs to be a complaint that is filed against him, but clearly, as of now, there's no complaint that has been filed against him. But if you talk about the Congress leaders, they're very clearly coming out and saying they are taking a moral high ground. We have suspended him, and pending inquiry, we'll see what to do with him next. So clearly, a suspension has been done, but will the top netas take a note of it? Will they take any lessons from it or something? Only the time will tell. Right. I have Mr. A.L. Banerjee, former DGP of Uttar Pradesh. But before that, let's quickly listen into what happened in that particular instance. अरे इधर सुनो, तुम्हारा नाम लिया, मेरी सुनो तुम, मेरी बात सुनो, तुम्हारे ग्रुप में से कोई भी लड़का जा रहा हो, कुछ भी बोला, तुम्हारा नाम लिया किसी ने? अरे मेरा नाम नहीं लिया, अभी लड़की अगर दायरे में तो अच्छी लगती है, ठीक है, बता रहा हूँ मैं पहले भी, और अगर लड़के अगर कॉलेज में लड़के भी अगर दायरे में तब भी अच्छे लगते हैं, तुमसे कमेंटबाजी नहीं हुई है, ठीक है, तुमसे कमेंटबाजी नहीं हुई है, ठीक, मैंने मान लिया मेरे पे कमेंटबाजी नहीं हुई, तो हम वहाँ पर से निकले, ये मेरे पास झुके, फिर क्यों बोला कि गाना लग गया? किसके झुका? कान में फोन लगा होता, पीछे नहीं दिखा, कान में फोन लगा होता, नहीं लगा? हाँ, वो तो मैंने, आप कान में फोन लगा तो मैंने अभी गलती कराई थी, इन्होंने बोले कैसे फिर बीच में? फर्स्ट ईयर में हो, अभी तुम्हें 3 साल रहना यार, सुधर जाओ, सुधर। हम 3 साल नहीं रहे, हम अभी 6 साल ज्यादा रहे तो कॉलेज का गेट दिवाना मुश्किल करा देंगे तुम्हारा, ये बात ध्यान रखना। हम यहाँ 6 साल कॉलेज नहीं आ पाओगे। Okay, Mr. A.L. Banerjee, I just wanted you to also listen into this. This is extremely important because this might be a case of eve-teasing, but this is just where it begins, isn't it? The power equation there, where you have a student leader on one side and a young teenage first-year college student in Shahjahanpur in Uttar Pradesh. Now, look at the intimidation that she's facing. She's being asked to behave, or else she will not be able to continue her tenure in the college. It's terrible, absolutely terrible. Prima facie, this video itself should make the cops there register an FIR against this man for threatening, for obstructing, for being so obnoxious with this lady. That's number one. Number two, if he is a student of the college should initiate an action and probably expel this man. Thirdly, as far as the political party is concerned, that's their outlook. They should see what they should be able to do. But this is an example where probably the strictest action possible legally should be taken against this groom. In fact, the history sheet could be opened. He feels entitled. He feels empowered.
and he believes that he can get away with anything. He's just telling a girl, young girl, Yes. to behave herself. So I think he's a budding criminal. He should be, history sheet could be opened against him. Right. And, But I was just wanting to ask you that, when we talk about a woman who has to stand up to these men, at all levels, I mean, today it's a student, before this it's a nun, and then it's an intern or a fresher in a corporate organization. It's the same story. I mean, there are attempts to silence the woman at the first instance. Our society is this kind of a shape. We have to behave as a society. We have to grow up as a society. And just see, you can see there are people who are making videos of this particular incident. There are a couple of people who are standing there. Absolutely no one is objecting. And this is not only as far as the females are concerned. Yes. Any other crime which is taking place, any other incident which is taking place, nobody intervenes, nobody interferes. They believe that it's not their doing. They need not. They shouldn't. They don't want to be part of it. Our society has to improve. Until the society improves, the criminal justice system is going to collapse. Yes, well, this is why we are exposing it, sir, that just to understand how difficult it is for a woman to stand up to the brutes when it really comes to it. This video is perhaps a good example of how a woman has to fight her way through single-handedly up against so many of them. Thanks, Mr. Banerjee, for joining us. Vijay Bahadur Pathak of the BJP joining us. विजय बहादुर पाठक जी, ये शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक मामला है जहां पे बीजेपी की सरकार है। कई बार हमने देखा कि कैंपसेस के अंदर इस तरह लड़कियों को डराया धमकाया जाता है, और बीएचयू का मामला अभी भी फ्रेश है हमारे दिमाग में, और ये एक दूसरा कैंपस है शायद जिसमें इसी तरह की घटनाएं बार बार होती रहती है। लड़कियों को धमकाया जाता है कि चुप रहो वरना तुम्हें यहाँ कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, ये जो वीडियो आया है वो दुखद है, स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश की घटना है, इसलिए सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से भी होगा। तो जो ये वीडियो आया उसमें जो प्रशासनिक उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक अधिकारी जो कार्रवाई करना होगा उनको वो भी देख रहे हैं, और मैं आपके फोन खत्म होने के बाद मैं भी उनको कहूंगा कि इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आखिर यह जो परिस्थिति बनी है, और जैसी मेरी जानकारी है वो किसी जो व्यक्ति डरा धमका रहे हैं वो किसी दल के कार्यकर्ता हैं। ये कदापि उचित नहीं है। समाज में जो लोग भी इस तरह के किसी भी दल का कार्यकर्ता इस तरह का काम करता है तो उसी तरह उसे न तो किसी तरह का संरक्षण दिया जाना चाहिए, न तो उसका बचाव किया जाना चाहिए। सरकार बिना भेदभाव के इस पूरे मामले पर कठोर कार्रवाई करे। जी, वो एक मसला है। दूसरा मसला ये है जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो, उनको इतना अधिकार कहाँ से मिल जाता है कि वो जो स्टूडेंट्स के इश्यूज है उस पे रहे, वो पॉलिटिक्स पे आ जाता है और इस हद तक आ जाता है कि वो उनको इतना पावरफुल वो फील करते हैं। शायद इसलिए करते हैं कि एक लार्जर पॉलिटिकल पार्टी का उनके ऊपर हाथ रहता है, उनका ब्लेसिंग्स रहता है। देखिए, बात तो सही है, इसीलिए मैंने उसको प्रारंभ में कहा कि किसी राजनीतिक दल से, किसी सामाजिक संगठन से जो लोग संबद्ध होकर के उसके बाद इस तरह के व्यवहार करते हैं तो कहीं न कहीं उस संगठन पर भी ये सवाल उठता है। और मुझे जो जानकारी है, इस पूरे प्रकरण में एक राजनीतिक दल के से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति का मामला है। तो मैंने इसीलिए कहा कि बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग भी किसी दल से संबंध रखते हैं उनके वरिष्ठ लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि समाज में इस तरह का जब काम होता है तो कहीं न कहीं संदेश खराब जाता है। बहन बेटी सबके घर की है। जी, सस्पेंड तो इनको कर दिया गया जिन्होंने इस तरह के थ्रेट्स इशू किए और धमकाया, बट क्या वो काफी है और क्या एक्शन आप चाहेंगे कि लिया जा सके? इस तरह के जो एरोगेंस है, जो पॉलिटिकल एरोगेंस है, जो स्टूडेंट लेवल पर भी अब हमें दिखने लगा है। नहीं, जो ये एरोगेंस है, मैंने इसीलिए कहा कि जो कानून का सुसंगत नियम है उन प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई भी की जानी चाहिए, कि ताकि कुल मिलाकर कार्रवाई का उद्देश्य है कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, और जो लोग इस तरह का कहीं मनमानस बना रहे हैं उनके बारे में संदेश जाए कि रोकें। और ये प्रिवेंटिव जो एक्शन है उसको एक्शन को सरकार भी लेगी जी। और ये राजनीतिक दल को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के जो लोग उनके एलिमेंट उनके दल में काम कर रहे हैं, और जवाबदेही स्वाभाविक रूप से उन लोगों की है। जी, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में विजय बहादुर पाठक जी, ये एक मसला है विमेन सिक्योरिटी का। कोई एक कैंपस की बात नहीं है, ये अलग अलग कैंपसेस में ये हो रहा है, और जितना आप इसको नजरअंदाज करेंगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि योगी सरकार अपना इमेज बनाए? इट्स एन इलेक्शन ईयर, डू यू वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ अ पिक्चर कमिंग आउट ऑफ उत्तर प्रदेश?
इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं ये इलेक्शन ईयर हो या ना हो, जनता ने यदि हमें दायित्व सौंपा है तो स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है तो ठीक करना चाहिए। जहाँ कहीं भी घटना होती है उन घटनाओं से हम सरकार के बचाव की स्थिति में नहीं होते हैं, उन घटनाओं पर कठोर कार्रवाई करने के बाद स्थिति बने ताकि आगे घटनाएं ना हो। और चाहे चैनल का उद्देश्य हो, चाहे सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, उन सबका उद्देश्य है कि ये घटनाएं ना हो, इसलिए प्रिवेंटिव कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी होती है वो हम प्रोएक्टिव होकर के एक्शन भी लेते हैं, लेकिन ये घटनाएं हो रही हैं तो इन घटनाओं को सच को भी स्वीकार करते हैं और की संभावनाएं तो लगातार हैं, उस काम को कर भी रहे हैं। जी, कानून व्यवस्था बीजेपी सरकार के हाथ में है उत्तर प्रदेश में। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होगी। थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस मिस्टर विजय बहादुर पाठक।